हाय, दिस इज़ पीयूष अरोड़ा एंड आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि है एक नए इमिग्रेंट के लिए क्या क्या समझना ज़रूरी है बिफोर कमिंग टू कनाडा एंड आफ्टर कमिंग टू कनाडा। लाइक जो सेटलमेंट पीरियड होता है फ्रॉम द डे यू गेट योर COPR to your year one, there are a lot of things that happen, and moving to a new country is not a joke. So आपके पास एक नया सिस्टम होता है, कुछ भी जैसे आपकी कंट्री में होता है वैसे यहाँ नहीं होता है. सो यू लर्न अ लॉट एंड यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस हु हैव बीन थ्रू द सेम जर्नी. एंड जब मैं इंडिया में था और कनाडा आने के लिए प्रिपेयर कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखता था बिकॉज दैट्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. दीज आर पीपल लाइक मी who have been through it. They know what we need to learn, what we need to learn most importantly, and that helped me a lot. And हाल ही में I completed 2 years here, and I thought maybe I'll share a few things that I came to know through my experience, and few mistakes we did, so that you don't repeat them. तो ये आज का वीडियो उसी के ऊपर है. एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि कुछ पॉइंट्स इसमें मिसिंग भी हो सकते हैं. हो सकता है आपको कुछ और जानकारी हो जो इसमें ना हो. मे बी मैंने कभी उन चीज़ों को इनकाउंटर नहीं किया. बट फ्रॉम द डेट यू गेट योर COPR टू योर सेटलमेंट, लाइक ईयर वन एंड से, उसमें क्या क्या टू डूज होते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है. कई चीज़ें हमसे मिस हुई ड्यूरिंग आवर सॉफ्ट लैंडिंग एंड दे कॉस्ट अस, and I will take you through them. So I don't want them to be a issue for you. This is my way of giving back to you, because 2 years back I received a lot from fellow YouTubers who were telling me about their experiences and still follow them like after 2 years. But I just want to give back through this, and I'll take you through phase wise, like chronologically, when you get your COPR to your year one end, what all you need to take care of. आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या चीज़ें एक पर्टिकुलर स्टेज पे कर लेनी है. तो लेट्स गो थ्रू द लिस्ट एंड लेट मी बिगिन. सो हमारा जो सॉफ्ट लैंडिंग था कनाडा में वाज इन जून 2019, and as I mentioned earlier, we didn't come and settled in Canada till January 2022. तो अब जब आप फर्स्ट अराइव करते हैं एंड सबसे पहली आपकी जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है या हार्ड लैंडिंग होती है, लाइक डिपेंडिंग ऑन आप घर वापस जा रहे हैं या आप कंटिन्यू कर रहे हैं कनाडा में परमानेंटली स्टे करना, तो उस समय पे काफ़ी सारे काम होते हैं. स्पेशली अगर आपकी सॉफ्ट लैंडिंग है तो ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट, एंड हार्ड लैंडिंग है तो आप थर्ड वाला जो बैंक अकाउंट क्रिएशन है वो आप करेंगे ही सूनर और लेटर. बट अगर आपके पास आप सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं तो आप वापस जाने वाले हैं आफ्टर अ फ्यू डेज, एंड देन आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी विद इन दैट टाइम फ्रेम. और ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो थोड़ा घूमना भी चाहते हैं बिकॉज दे आर कमिंग टू कैनेडा फॉर द फर्स्ट टाइम. तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है और घूमना भी होता है और काम भी बहुत सारे होते हैं. तो पहली चीज़ जो यू कैन सी इज़ द COPR signatures, which is obviously there's a process in which you have to sign the COPR at the airport, and then only you get your PR, and the PR cards are mailed to you later on. So COPR signatures, though, the system will ensure that you do, right? So you can't forget it. Uh, it will happen. But what is important from your end कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए. डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रूफ ऑफ फंड्स है या और भी कुछ भी अपने एप्लीकेशन में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच किया है तो दैट शुड बी विद यू, हैंडी विद यू. आई एम नॉट सेइंग दे विल आस्क यू फॉर द डॉक्यूमेंट, बट आपके पास होना चाहिए. और हो सकता है वो कुछ पूछ लें, एंड एट दैट टाइम यू शुड हैव ऑल द हार्ड कॉपीज विद यू. एंड ये एयरपोर्ट पे हो जाएगा सब कुछ एज सून एज यू लैंड, बिकॉज इसके बिना आपकी इमिग्रेशन ही कंप्लीट नहीं है. आप बाहर ही नहीं आ सकते एयरपोर्ट से कनाडा के अंदर जब तक आप ये प्रोसेस ना कर लें. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सिन नंबर. नाउ सिन नंबर इज बेसिकली योर सोशल इंश्योरेंस नंबर, but
यहाँ पे उसका ऑब्वियसली उससे सोशल बेनिफिट्स वगैरह सब लिंक्ड हैं, बट एक और चीज़ होती है कि आप कब से यहाँ पे यू आर रजिस्टरिंग एज अ टैक्सेबल पर्सन हियर। नाउ टैक्स रेजिडेंसी डिपेंड्स ऑन कि आप कितना टाइम रुकते हैं एक कंट्री के अंदर। तो जैसे सॉफ्ट लैंडिंग करके चले गए तो आप टैक्स रेजिडेंट नहीं बनेंगे, बिकॉज आप 182 डेज नहीं रहे इन दैट ईयर। बट सिन नंबर इज द नंबर विद विच द कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी आइडेंटिफाइज यू। So it is very important to take that number on your soft landing itself. और ये generally service Canada पे होता है, which is kiosks are there. These are outlets where Canadian federal government provides the services to the citizens, to the PR holders and the like. So कभी कभी क्या होता है, आप अगर वीकेंड पे आपकी फ्लाइट लैंड करती है at the airport, तो सर्विस कैनेडा at my time used to be closed on weekends. तो जनरली वीकडेज पे आप COPR सिग्नेचर्स के राइट आफ्टर अपना सर्विस कनाडा पे जाके सिन नंबर ले सकते हैं। बट अगर आप वीकेंड पे लैंड कर रहे हैं या किसी भी रीज़न से सर्विस कनाडा बंद है, तो आप वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप बाहर आ जाएं। एंड आफ्टर 1 or 2 days व्हेन सर्विस कनाडा कियोस्क एंड ब्रांचेस आर ओपन, तो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसके पास के सर्विस कनाडा पे चले जाएं टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर सिन। And I said benefits in Canada are linked to it, the date that you come in. So this is very important कि आप कर लें. Now third one is the bank account. Now हो सकता है कि आप soft landing करके अपने अपने home country वापस चले जाएं, and then you are hunting for jobs in Canada. One thing that you need to understand is the hiring process, even though is not quick in terms of getting candidates, but once you are selected in a company, the regular notice period in Canada is like 15 days. So they want a person to join. जबकि इंडिया में कुछ एम्प्लॉयर्स 1 महीना, कुछ एम्प्लॉयर्स 3 महीना, डिपेंडिंग ऑन योर डेजिग्नेशन, योर जॉब, योर सेक्टर, इट कैन बी वेरी वेरिंग। एंड हो सकता है आपको कोई कनाडा में जॉब मिल जाए वाइल यू आर इन इंडिया, एंड वो लोग आपको कहें कि 15 दिन में आप ज्वाइन कीजिए या 1 महीने में आप ज्वाइन कीजिए। तो एट दैट टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एनी वे टू लीव योर प्रीवियस एम्प्लॉयर इन इंडिया who has a longer notice period and migrate. A second problem will be the employer will ask you for direct deposit information, like where do you want your pay to come, and this will happen pre your joining or may happen in the first week after you join. So a lot of employers ask you before joining because they want to set up their accounting side. They want to, like, in their payroll, they want to add your bank information. So if you get a job sitting in India and आप अभी अपने पुराने employer के साथ you are negotiating the period, and इधर से the Canadian employer wants you to send the banking information, तो it's very important कि आप बैंक अकाउंट अपनी सॉफ्ट लैंडिंग पे खोल लें। एंड आप खोल सकते हैं बैंक अकाउंट, मतलब PR कार्ड लेके जा सकते हैं एंड आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं यूजिंग द एड्रेस दैट यू आर लिविंग एट। एंड वी आर कमिंग टू अकोमोडेशन इन जस्ट अ बिट, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिट। बट बैंक अकाउंट खोलने से यू विल बी सॉर्टेड इन अ लॉट ऑफ वेज, लाइक आगे कहीं पे भी आपको अपना बैंक अकाउंट देना, यू हैव इट। So these are a few things on arrival, especially for soft landing. Hard landing, as you know, you'll get enough time to do both SIN and bank accounts. So इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर आप यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो रहे हैं ऑन योर फर्स्ट अराइवल। अब इसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल डेज। इनिशियल डेज डिफ़िकल्ट तो होते ही हैं। यू आर अपरूटिंग योर सेल्फ, आप पूरा जहाँ पे आप रह रहे थे फ्रॉम द लास्ट 20, 30, 40 years, यू आर कमिंग टू अ न्यू कंट्री, यू डोंट अंडरस्टैंड प्रोसेसेस हियर, यू डोंट अंडरस्टैंड रूल्स रेगुलेशंस टू बिगिन विद, राइट? तो वो बहुत सारी अनलर्निंग रीलर्निंग होएगी, बट a few things in terms of finding accommodation, it's very important कि आप अपने होम कंट्री से ही Airbnb, अगर आपको Airbnb में रहना है तो कुछ टाइम का Airbnb, कुछ लोग 15 दिन के लिए रहते हैं, कुछ लोग 1 महीना के लिए रहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लंबा भी रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन
आपका क्या सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि आप कब फर्स्ट रेंटल घर में शिफ्ट हो जाएंगे, उस हिसाब से आप अपना एयरबीएनबी का ड्यूरेशन तय कर सकते हैं. एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ सर्चेस अराउंड पब्लिक ट्रांजिट, बिकॉज जब आप नए नए आएंगे आपके पास कार नहीं होगी, तो आपको सबवे या फिर गो ट्रेन या फिर बसेस के नेटवर्क के आसपास आप प्रेफर करेंगे एयरबीएनबी. या आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं कि मेरा जहाँ ऑफिस है या जहाँ पे मेरे फील्ड के काम के ज़्यादातर ऑफिसेज हैं उसके पास ही मैं ले लूँ, सो दैट आई एम इन अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम एनी वर्क प्लेस. जो कि पहले से ही आपको जॉब अगर मिल गई है या आपकी जो टारगेट जॉब्स हैं अगर वो किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में है, तो आप उसके पास ही अपना एयरबीएनबी ले लें. सेकेंड इज़, इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली इन कनाडा, तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप्स. यू कैन रीच आउट टू देम. Third is hotels. That's also something you can do pre-arrival. So all of these things need to be done pre-arrival. One of these, depending on your situation. So hotels के लिए travel aggregators, all the companies that have aggregating hotels across the city, you can use them. But the main thing to say here is that for the initial few weeks, आपको ये अपना accommodation पता होना चाहिए कि आप कहाँ रहेंगे. एंड ये चीज़ सब आप प्री अराइवल अपने होम कंट्री से कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बिट is on, once you got this accommodation, say you have a job or you're still searching for a job, you don't want to continue with the Airbnb for too long because it's slightly expensive, or I would say quite a lot expensive compared to regular lease agreement या rental. तो उस केस में आपको after a few weeks you have to move to a lease agreement. Now lease agreement यहाँ बहुत तरह के होते हैं. there is either a lease agreement of 1 year या फिर ये हो सकता है कि मंथ ऑन मंथ आपका लीज अग्रीमेंट हो. तो आपको ये देखना है कि आपका क्या कंफर्ट है. तो अगर आप टाई अप कर सकते हैं अपने आप को 1 साल के लिए एक प्रॉपर्टी पे, तो आप कीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो बट फॉर बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दैट आपको ये पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या. what are your needs basis the size of your family, basis unique needs, like if you have work from home most of the days, then you need a quieter space in the house where you can do your work, attend calls, all that. तो आपका जो यूनिक सिचुएशन है वर्क का और आपकी फैमिली का कॉम्पोजिशन जो है उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड what kind of accommodation you want. Now it could be a 1 bedroom plus den, it could be a 2 bedroom. I'm talking about condos. It could be a basement, it could be a regular house. But depending on your situation, you have to decide. And also, since you don't have a license, you can't drive a car, even if you buy one. You need to understand that wherever you go, initial few months, you need to be close to the transit. And now, how do you find this lease accommodation? One is you could work with a realtor. Realtor is a licensed profession in Canada, so you can work with realtors and you can attend showings and understand terms. What I mean by understanding terms is that, as we discussed, lease agreement में you can have 12 months lease agreement or month on month. Now there are conditions around deposits and checks. So some landlords might want you to give a first month and a last month deposit, and first month and the last month rental, last month becomes the deposit, and then checks for the remaining months, or you could be doing a transfer every month. So understanding all those terms, what are the lock-in requirements if you're doing a annual lease, can you break it, if you break it what happens, right? Because situations change, you might find another job, you have to go to another area, you might have to break this lease agreement. तो बहुत कुछ हो सकता है, और उन सब चीज़ों को सोच के you have to understand कि what are your terms and conditions in that particular lease agreement. उसके बाद tenant insurance होती है once you are signed on the lease agreement.
to protect your own furniture or any other things that you put in the condo, you have to buy tenant insurance. Now, if you don't work with a realtor, you can also search accommodation on marketplaces like Facebook Marketplace, and there also you'll find a lot of realtors posting, houses. But you might also meet some people who are directly posting. But yeah, the cautionary note there is that you have to be beware of any fake posts or scams, and you should try to verify identities before you start meeting people of these marketplaces. तो ये बहुत important है, so that initial few days you don't have any big issues or your concerns around any frauds. So beware of that. So this covers accommodation for first full year. Next we look at what happens after you sign the lease, right? So what happens when you sign a lease is the only thing that changes is that now you have a proof of address. Now what that does is it opens a few things that you can do now which you were not able to do earlier, like health card. Now health card is basically to get the provincial health insurance coverage. As you know, healthcare in Canada is free and it's a provincial subject, so depending on the province you go to, you apply to that health card. I'm mostly talking about things from an Ontario perspective because Ontario is where I live. uh, and you can apply for a health card. Lease agreement can be used as a proof of address. Now even driving license, which is second part, can be used as a proof of address in health card. But driving license, and for driving license you may not need any lease agreement, but getting a driving license itself is a lengthy process. So your Airbnb happens first, then your lease agreement happens, and then somewhere in between, somewhere after the lease agreement, you will do your driving license. Now why is that? Because driving license has multiple components. One is that you have to write a knowledge test, so you'll be reading a booklet, to just go through rules and signs, road signs. So once you do that, then you have road tests, and then you have a vision test to begin with. uh, then once you do the knowledge test, before going to the road test, you'll get trained on the road by an instructor, and that training you have to arrange. You have to find an instructor. And if you've been driving in India like me, तो आपको आदत है राइट साइड पे बैठ के गाड़ी चलाने की, और यहाँ पे एकदम उल्टा है. सो depending on your skill and your reflexes, you will take some time to adjust to the new side that you're now sitting on the left side. So that takes time. And driving here is a little different. जैसे इंडिया में हाईवे पे गाड़ी चलती है उससे काफ़ी अलग है यहाँ पे. You have to merge on a highway at a very high speed, and you have to be wary of blind spots वगैरह. काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बहुत अलग हैं, और उसको सीखने में टाइम लगता है. इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस बिना लीज अग्रीमेंट के शायद हो जाएगा, बट उसको लेते लेते बहुत टाइम लग जाएगा. तो तब तक आपकी हेल्थ कवरेज, इवन दो यू आर कवर्ड फ्रॉम डे वन, but still, to get your health card quickly, you can use your lease agreement to get the health card first. Now once health card is there, you are now getting your driving license. One major thing to note here is the DL extract. Now if you have driving experience in India or your home country, you can make use of that to skip one level in your road test. There are two types of road tests, and you skip one level, you get the full license if you present your DL extract, and the DL extract should be signed and stamped. So take care of all that before you come here. You get it from your regional transport authority, depending on which state you are in India, or your home country, depending on how and who issues such documents of experience. And you can use that to skip one level and move quickly directly to the highest level of light motor driving capability. So this is important, and a lot of people don't bring it. They bring it the second time they go back to their home country. It delays everything, right? It's just additional expense. You're doing two road tests, and for no reason. You're already so capable, you're driving
a car for so long in much tougher conditions back home. So that experience should count here. Now, last part is, settling in, and settling in is a very long process. It's all about feeling comfortable where you are, and इसमें time लगेगा और लगता है डिपेंडिंग, एंड इट विल ऑल्सो वेरी बाय इंडिविजुअल, किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, बट you have to identify what are the facilities around your house, कि आपकी नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर्स कहाँ हैं, कम्युनिटी सेंटर्स कहाँ हैं, लाइब्रेरीज कहाँ हैं, फार्मेसीज कहाँ हैं, सो दैट आपको जब भी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े यू हैव अ आइडिया ऑफ वेयर टू गो, especially when you don't have a car in the beginning, or you have a car, you don't have a license, right? So you won't buy a car in that situation. So uh, it's all good to know all these things, even transit options. And once you have the license, you purchase a car, which kind of helps in cities like Toronto, Mississauga, GTA areas, Brampton, to get from one place to another. Before that, it's a little harder, especially in winters if you don't have a car. So this I just wanted to cover a few things I felt everyone should know before they step into this new life, because बहुत कुछ अलग होता है, and बहुत कुछ आपको नया सीखना पड़ता है, और this is not an exhaustive list by any means. Everybody will have new experiences, but these are few things I felt I could have known in advance. Some of them I knew, some of them I didn't, but I collated everything I felt is important for a new immigrant. So अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर you are someone ahead in your journey to come here, or you're interested in becoming a PR. So I wish you all the best. Until next time, take care. Thank you.